Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss an important topic of further mathematics, relationship between graph of a function and its reciprocal. So before going to start this topic, there are some prerequisite concepts. In this lecture, we will be discussing the concept of rational functions. What are rational functions? We will be defining the concept of asymptotes. What are asymptotes? And then we will be learning different types of asymptotes and drawing graph of a function. What are the four important things which are important in drawing the graph of a rational function? And finally last पे हमारा relation between a graph of a function and its reciprocal. Let's start with the first thing, rational function. Rational function बच्चों क्या होते हैं? See this thing. Rational function is basically a function which has numerator and denominator both polynomials. This one is polynomial and this one is polynomial as well. P of x is also a polynomial and Q of x is also a polynomial, and Q of x is not equals to 0. Denominator polynomial is not equals to 0, and both polynomials can have a polynomial of different degrees. Suppose numerator polynomial की degree m है, so Q of x, let's name its degree m. So they can have different degrees. So numerator और denominator में अगर हमारे पास polynomials होते हैं, then that function is said to be rational function. Then we have concept of asymptotes. What is an asymptote? Asymptote is a line approached by a curve in the limit as the curve approaches to infinity. Let's understand this thing with the help of example. See this graph of a function. If we observe this graph of a function, we can see the vertical asymptote. The concept of vertical asymptote, we can see this is a vertical line. This is a vertical line, and we can see the behavior of the curve. कर्व का बिहेवियर बच्चों देखें कि किस तरीके से कर्व जो है वर्टिकल लाइन के साथ, इस लाइन के साथ उसका बिहेवियर क्या है, कि जैसे जैसे जो है वो कर्व closer to line जाती जाती है, its distance is decreasing but it never touches the curve. So definition of the curve is asymptote is line approached by a curve in the limit as the curve approaches to infinity. This line is approaching the curve, right, and it does not meet the curve, and this behavior of the curve and the line, we say that this line is an asymptotic line, this line is an asymptote to the curve. So we have three types of asymptotes: vertical asymptote, horizontal asymptote, and oblique asymptote. So these all three asymptotes will be discussed in detail. You see how to obtain vertical asymptote. If you are given a function y equals to 1 over x minus 3, so डिनोमिनेटर फंक्शन को बेटा पिक करें और उसको इक्वल्स टू 0 रखें. अगर आप उसे इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू x equals to 3. बेटा x equals to 3 is a vertical line over here. So we can see that this vertical line is the vertical asymptote of this curve. So this is vertical asymptote. Next thing is horizontal asymptote. Horizontal asymptote is y is equals to 1 over x plus 2 is the curve of the equation. We can see to approach this curve, to find this horizontal asymptote, what will we do? We will see this condition x approaches to infinity. अगर x approaches to infinity हम करें कर्व के अंदर, तो हम देखेंगे कि what is the behavior of y. y जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच करता है. For example, in the first equation, if x approaches to infinity, then 1 over x will approach to 0. And the curve y will approach to 2. That means y equals to 2 is the horizontal line. This is the horizontal line which is behaving as a horizontal asymptote of the curve. And in general, we say that mod of x approaches to infinity for horizontal asymptote. Mod of x approaches to infinity means
x approaches to infinity or x approaches to minus infinity. In both ways, we see the behavior of the curve y equals to 1 over x plus 2. We can see that the curve will be approaching a line y equals to 2. So this is a concept of horizontal asymptote. And finally, we can see the concept of oblique asymptote. Oblique asymptote na vertical hai na horizontal hai. You can see this line. This line is oblique asymptote and it is obtained whenever degree of numerator polynomial is 1 greater than the degree of the denominator polynomial. You can see degree of numerator is 2 and degree of denominator is 1. So difference between the two polynomial degrees of the two polynomials is 1. तो उनके दरमियान बेटा जो difference है that is 1. So in this way we will be getting a oblique asymptote. So if we divide this x square minus 4 by x minus 1, we will obtain this thing, x plus 1 minus 3 over x minus 1. So ये जो line है, this line is basically oblique asymptote, equation of oblique asymptote. X plus 1 जो है, ये जो है is representing the concept of oblique asymptote. Y equals to x plus 1 minus 3 over x minus 1 की equation में बेटा जो line की equation होगी x plus 1 होगी, that is representing the concept of oblique asymptote, right? तो बेटा यहाँ तक आके हमने तीनों जो asymptotes हैं उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वर्टिकल asymptotes क्या होते हैं. हम डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रख के जो इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं वहां से हमें वर्टिकल एसिम्पटोट्स मिलते हैं. और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो हैं वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, व्हेन वी apply a condition that x goes to infinity in the curve, and we will see the behavior of y, and y goes to 2 in this case. So y equals to 2 is the horizontal asymptote, and also obtaining the equation of oblique asymptote is similar to that of horizontal asymptote. In this equation as well, we will be applying the same thing. X goes to infinity. If x goes to infinity, then 1 over x minus 1 goes to 0. We can see this thing goes to 0. If this thing goes to 0, then the only thing left is y equals to x plus 1. So y equals to x plus 1 is the equation of oblique asymptote. Now we are in position to understand the concept of rational function, how to draw graph of rational function. These are the four important concepts: asymptotes, neighborhood, intercepts, turning points if it exists. एसिम्पटोट्स की डिस्कशन हमने अभी कंप्लीट की है. नेबरहुड ये एक अलग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेबरहुड को समझना. और इंटरसेप्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और टर्निंग पॉइंट्स हर कर्व के नहीं होते, लेकिन अगर होते हैं तो वो भी हमें कर्व स्केचिंग में बड़ी हेल्प करते हैं रैशनल फंक्शंस के केस में. सो इफ वी अप्लाई दीज आइडियाज over here in these equations, you can see that in order to obtain the vertical asymptote of this equation, first of all, what will we do? We will be equating x minus 3 equals to 0, and we will be getting x equals to 3. So we can see that this is the way to start with. कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इस इक्वेशन की जो एसिम्पटोट्स हैं वो क्या क्या हैं. सेकेंडली हम ये देखेंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, जैसे कि अभी डिस्कस किया गया था कि अगर हम x को अप्रोच करें infinity को, तो we will be seeing the behavior of y. So 1 over x minus 3 will be approaching to 0, and as a result y is approaching to 0. As a result y is approaching to 0. So that means x-axis in this case will be the equation of horizontal asymptote. So x-axis horizontal asymptote है यहाँ पे. तो दोनों काम एसिम्पटोट्स का काम सबसे पहले हमने करना है. तो हमें दोनों एसिम्पटोट्स के बारे में क्लैरिटी होगी कि वर्टिकल एसिम्पटोट विल बी एट समवेयर एट 3 and horizontal asymptote will be x-axis, and now we will be drawing the curve. For example, as we discussed the 4 points, neighborhood, the concept of neighborhood is very important. If we see the graph over here, you can see that graph of this function is showing that
the curve is drawing in this way. This part of the curve is over here and this part of the curve is over here. So question arises कि बेटा यहाँ पे कर्व का पार्ट क्यों नहीं है, इन दोनों पार्ट्स में कर्व का पार्ट क्यों नहीं है? ये पार्ट जो है वो यहाँ पे आ सकता था, ये जो पार्ट था ये यहाँ पे आ सकता था, तो हमने इसी रीजन को क्यों पिक किया है? कर्व ने यहीं पे आके कर्व की स्केचिंग क्यों हुई है? और स्टूडेंट को कैसे आइडिया होगा कि कर्व की स्केचिंग जो है वो हमने इस पार्ट पे करनी है? तो हम इस आइडिया को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड, कि नेबरहुड में किस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइन देते हैं. सो सी दिस थिंग बेटा कि we will be observing the case that neighborhood of 3 का neighborhood बेटा it will be 0.1 unit away from 3 both leftward and rightward. For example, we uh, pick a point in the neighborhood of 3 and it is for example 2.9 and 3.1. 0.1 गैप से हमने नेबरहुड पिक किया. एंड नाउ we will be observing the situation that what will be the case of the function y equals to 1 over x minus 3. If we put x equals to 2.9, we can see that y is negative. We can see y is negative. X minus 3 will be a negative number. So that means in the neighborhood of 3 from left hand side, y will be negative. So this thing is basically giving us a guideline that y intercept जो है हमारे पास ये y asymptote है, इसके नेबरहुड में बेटा लेफ्ट साइड पे हमें जो कर्व स्केच करनी है, that curve should be in this region. क्योंकि y नेगेटिव आया, लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये हमें गाइड कर रही है कि कर्व जो हमने यहाँ पे इस वे में स्केच करनी है. मोर ओवर यहाँ पे जैसे एक पॉइंट लिखा था, इंटरसेप्ट्स भी हमें हेल्प आउट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट्स, इफ वी पुट x equals to 0 in the equation, so it will give you y equals to 1 over 3 with negative sign in this equation. So y equals to uh, minus 1 by 3 is the point where the curve will intersect the y-axis. So let's start with the curve. Now we know that x-axis is the horizontal asymptote, one thing, and curve will be in the negative region of y. So what will we do? We will be sketching the curve like this, and it will just go with x equals to 3. So this is the point. This is the point where curve intersect the y-axis at x at minus 1 over 3. So it is y-intercept of the curve. तो बेटा आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो कर्व का रीजन पिक किया वो हमने इसके नेबरहुड की हेल्प से पिक किया. x को जो हमने पिक किया 2.3 is basically it is the neighborhood of 3 from left hand side, and we see the behavior of y, it is negative. So we sketch the curve in the negative region of y, keeping in mind x equals to 3 is the vertical asymptote and y equals to 0 is the horizontal asymptote x-axis, and minus 1 over 3 is the y-intercept. So these are the things you see giving us a guideline to sketch the curve in the right place. Now see 3 के neighborhood में अब हम दूसरा point लेते हैं, that is to the right of the 3.1, and if we take 3.1 in the equation 1 over x minus 3, so you can see that y will be positive. So y will be positive is giving us a guideline that curve will be in this region. Curve will be in this region. So let's sketch the curve keeping in mind the idea of asymptotes. So this will be the way to sketch the curve in this case. So you see कि neighborhood intercepts और asymptotes की हेल्प से हमने कर्व को, रैशनल फंक्शन के कर्व को हमने बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर लिया. और अगर आप इसको सॉफ्टवेयर वाली जो है कर्व के साथ कंपेयर करें तो यू कैन सी
कि ये कर्व और ये कर्व बिल्कुल एक ही कर्व हैं। उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाली कर्व स्केच करनी है तो उसी तरीके से आपके पास जो आइडियाज़ आएंगे वो वही होंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे x गोज़ टू इन्फिनिटी करेंगे और इन्फिनिटी करने के बाद हम कर्व को स्केच करेंगे। ये आपके पास एसिम्प्टोट्स हैं, एसिम्प्टोट को ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई इक्वल्स टू 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है और फिर ये जो डिसीजन है वर्टिकल एसिम्प्टोट जो है वो आपके सामने है। x गोज़ टू 0 करेंगे तो आपके पास ये y एक्सिस जो है ये आपके पास क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो y एक्सिस वर्टिकल एसिम्प्टोट है और इसी तरीके से y एक्सिस के नेबरहुड में हम पॉइंट पिक करेंगे। पॉइंट 1 पिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रीजन हमें गाइड करेगा कि हमने जो है वो इस रीजन में कर्व स्केच करनी है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो हमें गाइड कर रहा होगा कि हमने इसे ऊपर ऊपर रहना है। तो दिस पार्ट ऑफ द कर्व विल बी लाइक दिस। और फिर अगर आप नेगेटिव कोई पॉइंट पिक कर लें इस रीजन में वर्टिकल एसिम्प्टोट के नेबरहुड में, फॉर एग्जांपल नेगेटिव 0.1, तो नेगेटिव 0.1 विल बी -10, -10 plus 2 will be -8, and which is telling us that y will be negative to the left of vertical asymptote. So we are placing the curve in this way, keeping in mind that this one is vertical asymptote and this one is horizontal asymptote. So same idea will go for oblique asymptote. If x goes to infinity, 1 over x minus 1 will go to 0, and we will divide this thing, and after division, when this part goes to 0, y equals to x plus 1 will give you the equation of oblique asymptote. तो बेटा सबसे पहले oblique asymptote हम ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल एसिम्प्टोट को ड्रॉ करने का वही वे है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। सो x इक्वल्स टू 1 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट। यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट ड्रॉ होगी, ये हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अच्छा, या तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगी या ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि आपने देखा इसका प्रोसीजर एक ही है कि x गोज टू इन्फिनिटी। तो अगर x गोज टू इन्फिनिटी में हमारे पास या तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी एसिम्प्टोट के लिए या फिर ओब्लिक लाइन आएगी। तो ये इस केस में ओब्लिक लाइन आई है, तो दिस इज ओब्लिक लाइन, तो ये आपके पास जो है ओब्लिक एसिम्प्टोट आ गई है। तो कर्व की स्केचिंग बिल्कुल वर्टिकल के हिसाब से हम करेंगे, वर्टिकल के नेबरहुड में जाएंगे तो 1 के नेबरहुड में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें 1 के नेबरहुड में अगर हम पिक करें 1.1, तो 1.1 माइनस 1 विल बी पॉजिटिव, एंड बट 1 पॉइंट this thing 1.1 minus 4, it will be you see this thing 1.1 minus 4 divided by 1.1 minus 1, right? So what will be the value of y? Obviously it will be negative. So value of y is negative. So you see जो है वो राइट पे वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट पे जो कर्व आपको नजर आ रही है वो कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव y से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि इस केस में जब वो आएगी तो लाजमी तौर पर x को इंटरसेक्ट करेगी। तो x को इंटरसेक्ट करने के लिए हम y को 0 रखेंगे एंड वी विल बी ऑब्टेनिंग द x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट ऑब्टेन करने के बाद हम x इंटरसेप्ट पे उसकी इंटरसेक्शन करवाएंगे और फिर ओब्लिक एसिम्प्टोट के साथ एसिम्प्टोटिकली जो बिहेवियर है कर्व का एसिम्प्टोट के साथ वो उसी के साथ बिल्कुल साथ साथ हम उसे स्केच करेंगे। सेम इज द केस विद द सेकेंड पार्ट कि यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप पिक करते हैं नेगेटिव रीजन में 1 से स्मॉलर वैल्यू पिक करते हैं, 0.9 पिक कर लेते हैं, तो 0.9 के केस में 0.9 minus 1 will be negative and 0.9 square minus 4 will be negative as well. As a whole, value will be positive and y will be positive. So to the left of the vertical asymptote, curve will be coming in this way. So this is how we will be sketching the vertical asymptote, oblique asymptotes and the rational functions in all the three cases. Let's move to the topic of today's lecture, relationship between a graph of a function and its reciprocal. Now these are the points that are very, very important. These points are really very important to understand the graph of a function and its reciprocal. I'm reading these points one by one.
Consider two functions f of x and g of x, and relation between the two functions is that g of x is basically reciprocal of f of x. So g and f are reciprocal of each other. So one by one we will be discussing the points. Zeros of a function f of x are the vertical asymptotes of g of x. जी बेटा, जो f of x को हम जीरो के इक्वल रख के जो x इंटरसेप्ट ऑब्टेन करेंगे उनको कहते हैं जीरोस ऑफ द फंक्शन. वही जीरोस ऑफ द फंक्शन g ऑफ x के केस में क्या होंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स होंगे. राइट. इन तमाम चीज़ों को अगली दो एग्जांपल्स हैं. इन सारे चार और से पांच पॉइंट्स हैं जो हमारे पास. ऑल दीज 5 points will be discussed in the next two examples one by one. So next point is, if f of x is increasing on some interval say a b, then g of x will be decreasing on a b and vice versa. अगर कोई इंटरवल है f of x जो है फंक्शन, it is increasing on that interval, then g of x will be decreasing in that interval ab, and vice versa. Means, for example, if f of x is decreasing in that interval ab, then g of x will be increasing in ab. Next point is, if f of x has a maximum value at some point ab, then g of x will have minimum value at a1 over b and vice versa. For example, एफ ऑफ एक्स की हम कर्व स्केच करते हैं और किसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ए बी, तो यू सी दैट मिनिमम वैल्यू जो होगी जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयर इज नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट बेटा वही रहेगा, ए है यहाँ पे भी ए है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट. जो एफ का वाई कोऑर्डिनेट है, जी का वाई कोऑर्डिनेट बेटा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो कोऑर्डिनेट, द मिनिमम कोऑर्डिनेट ऑफ जी विल बी a1 over b and vice versa obviously. In the fourth point, if f of x has y intercept at 0 c, right, then g of x will have y intercept at 0 1 over c. जैसे कि आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दरमियान जो जनरल रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का है. हर पॉइंट के साथ क्योंकि ये बिहेवियर है तो वाई इंटरसेप्ट के साथ भी ये बिहेवियर होगा कि हर वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका रेसिप्रोकल होगा, तो वाई इंटरसेप्ट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. सिंस वाई इंटरसेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो वी आर पर्टिकुलरली डिस्कसिंग दैट पॉइंट इन सेपरेट. सो 1/c, सी एंड 1/c जो है ये रिलेशन वही है जो जी का एफ के साथ है. And finally, if f of x is 1 or minus 1, for example, suppose we consider the one case first, f of x is equals to 1 for some x belongs to domain of f. किसी domain of f के लिए कोई value है domain of f में जिसके लिए f of x जो है हमें 1 देता है, तो g of x भी उसी value के लिए हमें क्या देगा, 1 देगा. And same goes for minus 1 as well. So let's apply these all points in an example. ओके देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल को देखें. एफ ऑफ एक्स इज 4x² माइनस 8x प्लस 2. ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स उसका रेसिप्रोकल है 1/4x² माइनस 8x प्लस 2. तो दोनों ग्राफ आपके सामने हैं. कंपैरिजन में हमने जो चीज़ें स्टडी की थी उनको आप वन बाय वन अप्लाई करें. जो पॉइंट हमने अभी स्टडी किया है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने स्टडी किया था वो ये किया था that zeros of a function f of x are the vertical asymptotes of g of x. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. सो देखें इसके जो जीरोस हैं बेटा, इसके जीरोस ये हैं, दीज आर द पॉइंट्स. इसके जीरोस ये दो पॉइंट्स हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स हैं. तो अगर आप देखें एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल में वर्टिकल एसिम्प्टोट्स नजर आएंगे. ये देखें 2 से थोड़ा सा पहले आपको यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है ओरिजिनल फंक्शन में और उसके रेसिप्रोकल में हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट बना हुआ नज़र आ रहा है. एंड सेम गोज फॉर हेयर, ये दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है और यहाँ पे आपको दूसरा वर्टिकल एसिम्प्टोट नज़र आ रहा है. तो अगर आपको जीरोस ऑफ द फंक्शन पता है तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ के वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या हैं. इस कर्व को स्केच करते वक्त हमें पता होगा कि एक्स इंटरसेप्ट्स क्या हैं, तो हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करने हैं. राइट. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था.
Second point is f of x is increasing on some interval, say AB, then g of x will be decreasing on that interval AB. So this is the second point to be discussed. ये आपके पास पॉइंट है और इसको हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं. देखें आपके पास ये जो पॉइंट है वर्टिकल एसिम्पटोट से पहले पहले यू कैन सी कि जो कर्व है फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है. इट इज डिक्रीजिंग बिफोर दिस पॉइंट. पहले एक्स इंटरसेप्ट से पहले दिस पार्ट इज व्हाट दिस पार्ट इज डिक्रीजिंग. तो आप इसके बिहेवियर को देखें कि वर्टिकल पहले वर्टिकल एसिम्पटोट से पहले पहले यू कैन सी द कर्व इट इज इंक्रीजिंग, इट इज गोइंग अपवर्ड. ये बेटा देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. और इसी तरीके से अगर आप दूसरा वर्टिकल एसिम्पटोट देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे एसिम्पटोट के राइट पे दूसरे एक्स इंटरसेप्ट के राइट पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कर्व है डेट इज इंक्रीजिंग. और अगर आप दूसरे वर्टिकल एसिम्पटोट के राइट पर देखें तो आपको ये कर्व डिक्रीज होती नजर आएगी. ठीक है. दिस पार्ट इज इंक्रीजिंग और उसके रेसिप्रोकल उस वक्त क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो ये सेकंड पॉइंट था जो हमने अभी डिस्कस किया था. और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा था कि अगर एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है तो फिर क्या होगा, जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी. और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि उसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो 1/b रेसिप्रोकल हो जाएगा. इस आइडिया को ज़रा देखते हैं हमारे कर्व के ऊपर. इफ़ यू सी द minimum point of the curve, you can see that it is -2. It is at -2. Minimum point is at -2 and basically minimum point is 1 -2. So f of x has minimum value at 1 -2. So according to the concept, it has maximum value at 1 minus 1/2. Let's see this thing in the graph. ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राफ के अंदर भी हमें यही वाली बात ऑब्जर्व होती है नहीं होती. तो यू कैन सी दिस पॉइंट ओवर हेयर दैट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व एंड वी कैन सी दैट एट दिस पॉइंट this is 1, x coordinate is 1 and y coordinate you can see that y coordinate will be somewhere in the middle of -1, that is -1/2. This value is -1/2. तो x कोऑर्डिनेट पे बेटा कोई डिफरेंस नहीं आया, वो 1 है, वहाँ पे भी 1 है. और ये जो -2 है इसका यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल नज़र आ रहा है कि इसका मिनिमम पॉइंट 1 -2 था तो उसका मैक्सिमम पॉइंट -1 -1/2 हो गया. ठीक है. रेसिप्रोकल ऑफ द y कोऑर्डिनेट हो गया. तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम ये रिलेशन डेवलप कर रहे हैं. एंड सिमिलरली उसके ये जो कर्व स्केचिंग है उसके पॉइंट पे हम पहले बात कर चुके हैं कि नेबरहुड में हमने कैसे, ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है तो इसके नेबरहुड में देखेंगे तो अगर आप इसके राइट पे देखेंगे तो आपको y की वैल्यू नेगेटिव नजर आएगी. तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कर्व को स्केच करना और फिर आप इसमें मैक्सिमम पॉइंट को कंटेन करेंगे और इस दूसरी वर्टिकल एसिम्पटोट के लेफ्ट पे देखेंगे तो कर्व फिर नेगेटिव नजर आएगी. तो फिर आप यहाँ से इसको स्केच करके यहाँ तक ले जाएंगे. ठीक है. अगर ये वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट ना करता, ये वाला सॉरी ये जो है मैक्सिमम पॉइंट ये एग्जिस्ट ना करता और हमें ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट के लेफ्ट पे y पॉजिटिव मिल जाता तो बेटा कर्व की स्केचिंग फिर इन दैट केस ऐसे हो जाती. बिल्कुल हम इसको यूं साथ लेके चलते और यूं यूं कर्व स्केच कर रहे होते इन दैट केस. लेकिन क्योंकि हमें जो दूसरा वर्टिकल एसिम्पटोट है उसके लेफ्ट पर भी y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी अगर हम यहाँ पुट करें तो वो हमें गाइडलाइन देगा. और मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से भी हमें पता है कि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. इस वजह से हमें पता है कि कर्व ने यहाँ से दोबारा टर्न करके इस तरफ आना है. तो ये गाइडलाइन है. अगर ये गाइडलाइन हमें यहाँ पे ना होती तो फिर हम ये नहीं जानते थे कि इसको यहाँ लेके जाना है या यहाँ लेके जाना है. तो ये हमें कैसे पता चला कि वर्टिकल, एक तो हमें ये सामने पता है कि इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका मिनिमम है तो इसका मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का फिर प्रॉपर्टी है कि कर्व इसके बाद डिक्रीज करेगी और इस तरफ जाएगी. एक चीज़. और दूसरी चीज़ क्या है कि इस वर्टिकल एसिम्पटोट के लेफ्ट पे हम देखेंगे अगर वाई नेगेटिव हमें मिलता है नेबरहुड में तो ऑब्वियसली कर्व ने इस पार्ट पे जाना है. पॉजिटिव मिलता तो इस तरफ आता.
तो ये हो गया, इस सारे पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इन दिस एग्जांपल we have a function f of x equals to x square plus 2 and g of x equals to 1 over x square plus 2, and in this case we are discussing the graph of f of x and g of x on the same graph। एक ही ग्राफ के ऊपर देखते हैं, ये जो है आपके पास f of x का ग्राफ है, और ये जो इस तरफ ग्राफ ड्रॉ हुआ हुआ है रेड में, ये g of x का ग्राफ है, राइट। तो यू कैन सी दैट graph of f of x, it has minimum value at 2 0 2, it has minimum value at 0 2, whereas the reciprocal has maximum value at 0 1 by 2। y कोऑर्डिनेट को देखें, उसका रेसिप्रोकल हो गया। और बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला रीजन देखें कि आप देखें यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग बिफोर इट्स वर्टिकल asymptote, before in this part, not vertical asymptote. Vertical asymptote does not exist in this case. There does not exist any vertical asymptote of g of x, and obviously f of x does not have any vertical asymptote. It is not in denominator. So you can see the behavior that this in this region f of x is decreasing. So what is the behavior of its reciprocal? It is increasing. It is increasing till it reaches maximum point. And in this part, you can see now in the green highlights, you can see that function is increasing. And what is the behavior of its reciprocal? It is decreasing. So it is decreasing in the green region. So all the properties of a function and its reciprocals are, we can see now, they are all fulfilled. So if we see this software with the help of which we are drawing the graphs of the function, so we can see that if there is simply 1 over x is the graph of the function, then 1 over x, the graph of 1 over x is this way, and x-axis is the horizontal asymptote and y-axis will be the vertical asymptote. But if we add something over here, for example, we add 2, as we discussed in the example, what will happen? We will see that the graph will have a horizontal asymptote over here, then add 2. So if we just shift this to, for example, if I write, if I shift this y equals to 2 line over here, we can see that y equals to 2 is the horizontal asymptote of this curve, right? So if we change the different values, for example, we say 3, and then horizontal asymptote will be at 3, 4, horizontal asymptote will be at 4, so whatsoever। तो जो बेटा आपके पास 1 ओवर x के अंदर जो हम उसकी वर्टिकल ट्रांसलेशन करेंगे, 2 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 1 ओवर x में जो कुछ भी वो ऐड हो रहा होगा, that will be basically the equation of horizontal asymptote। यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है तो y equals to 5 will be the horizontal asymptote। 6 ऐड हो रहा है, ठीक है, let's see, 5 ऐड करते हैं तो, और देखते हैं कि 5 क्या horizontal asymptote होता है, तो you will see that 5 will be behaving as, at 5 we will be observing horizontal asymptote। तो बेटा आपने देखा कि अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहाँ के बन गया, 5 पे बन गया। तो ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर आपके पास ये इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस सम कांस्टेंट a है, देन व्हेन x गोज टू infinity, then y goes to a, so y goes to a means y equals to a will be horizontal asymptote। तो बेटा ये रैशनल फंक्शन से रिलेटेड हमने सारी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इम्प्रूव हुए होंगे, रैशनल फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसिम्प्टोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड देन फाइनली द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। सो ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड आर वेलकम। आप जो है वो नीचे मेरे चैनल पर क्वेश्चंस करें, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है इंशाल्लाह आई विल बी रिप्लाइंग पॉजिटिवली। अल्लाह हाफिज़।